फ्रांसीसियों ने इस्लाम दुश्मनी में तमाम हदें पार कर ली हैं। हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं इस्लाम का खलीफा अब्दुल हमीद खान हूं। अगर उस ड्रामे को नहीं रुकवाया तो तुम्हें तबाह करके रख दूंगा। Maligning, insulting, ridiculing our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The West couldn't understand what was the problem. The Prophet lives in our hearts. Pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. Bunu öğrensin. İnanıyoruz ve istiyoruz Allah'ın izniyle. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdi. O son peygamberdi. Yeyse kapılma, Allah bizimle beraberdir dedi. Gelen emir son derece açıktır. फ्रांसीसी अखबार के मुताबिक एक थिएटर में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार बनाया गया है। इसे आज रात पेरिस में दिखाया जाएगा। हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त है। फख्र कौनैन सरवर आलम की गुस्ताखी कर रहे हैं। मेरी जात की बात होती तो परवाह भी ना करता, लेकिन मेरे दीन पर, मेरे पैगंबर पर हमला करेंगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। तलवार सौंत लूंगा, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हुर्मत रसूल का दिफा करेंगे। फौरन फ्रांसीसी सफीर को बुलवाएं। जैसा आपका हुक्म हो हुजूर। अगर मुसलमानों का वतन कमजोर पड़ जाए और वो आराम से सोते रहें तो उनका कुछ नहीं बन सकता। हुजूर, उनकी कोशिशें इस्लाम को रूए जमीन से मिटा देने के लिए हैं। उनके रास्ते की वाहिद रुकावट इस्लाम की अलम बरदार ताकतवर सल्तनत है। उनको तकलीफ सिर्फ सल्तनत उस्मानिया से है। वहीं खड़े हो जाओ। सुल्तान मौज़म थियोडोर हर्जल हमारे सिफारत खाने में मेहमान हैं। कौन है वो? इतनी मामूली सी बात के लिए हमने आपको बुलाया है, यही ख्याल तो नहीं आपका? तो फिर क्यों बुलाया गया है? सफीर साहब, हम मुसलमान अपने पैगंबर से मोहब्बत करते हैं, इतनी कि उनके सच्चे आशिकों ने उनकी खातिर अपनी जानें निसार कर दी। बिला तरद्दुद हम भी निसार कर देंगे। सुना है कि आपने एक थिएटर के इनेकाद का ऐलान किया है जिसमें हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी का इरादा किया गया है। मैं बल्कान और इराक, शाम, जबल लिबनान, हिजाज, कफकाज, अनातोलिया और दारुल हुकूमत का सुल्तान, मैं इस्लाम का खलीफा अब्दुल हमीद खान हूं। अगर उस ड्रामे को नहीं रुकवाया तो तुम्हें तबाह करके रख दूंगा। फ्रांसीसियों ने इस्लाम दुश्मनी में तमाम हदें पार कर ली हैं। इस्लाम के खिलाफ उनकी हर्जा सराइयां मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। फौरन अलम खिलाफत बुलंद करना और फ्रांसीसी फौजी दस्तों के खिलाफ जिहाद करना खलीफतुल मुस्लिमीन आली जनाब सुल्तान अब्दुल हमीद खान का हुक्म है। अब से हम उनकी ही ज़बान में उनसे बात करेंगे। एक खुशखबरी भी सुनानी है। सुनाएं। फ्रांसीसियों ने थिएटर मंसूख कर दिया है हुजूर।
حرمت رسول کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے. یہ اللہ کا احسان ہے ہم پہ کہ اس نے اس کام کے لیے ہمیں چنا ہے. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. The most important thing I wanted to say here today, in explaining this Islamophobia, Mr. President, and I feel it's very important because maligning, insulting, ridiculing our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and there was a reaction in the Muslim world. The West couldn't understand what was the problem. There would be a reaction by the Muslims, and again, it was Islam, an intolerant religion. I blame a certain section of the people in the West who deliberately provoked this, knowing the impact it would have, but the majority of the people in the West didn't understand. The Holy Quran is the book of guidance for Muslims, and the Prophet's life was living the Quran. He was an example of what the Quran guided us to be. The Prophet created the state of Medina, the first state in Islam. That state was the basis of a Muslim civilization which became the predominant civilization for the next 700 years. And what was that state? It was the first time a welfare state was set up. The state took responsibility of the weak, widows, orphans, poor people, handicapped. It taxed the rich, spent the money on the poor. The state announced that all human beings are children of Adam, hence equal, whatever the color of their skin. In Islam, the Prophet announced that everyone was free to practice his religion. It was a sacred duty to protect the places of worship of all religions. He announced that every person is equal in front of law, whatever his religion or his color. And this incredible case, and I always quote this, that the fourth Khalifa, the head of state of Medina, he lost a court case against a Jewish citizen. So, number one, it showed there was a rule of law, no one was above law. And number two, that a Jewish citizen was an equal citizen. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. The Holocaust is treated with sensitivity because it gives the Jewish community pain. That's all we ask. That do not use freedom of speech to cause us pain by insulting our Holy Prophet. That's all we want. Thank you. La galibe illallah. Bunu öğrensin. Allah'tan başka galip yoktur. Tek galip o. Mahzun olmayınız. İnanıyorsanız muhakkak üstünsünüz. İnanıyoruz ve üstünüz Allah'ın izniyle. Şunu asla unutmayın sevgili kardeşlerim. O alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdi. O Yaradan'ın Habibim diye seslendiği efendilerin efendisiydi. O Hatemül Enbiya idi. O son peygamberdi.
O Miraç'ta peygamberlere namaz kıldıran imamdı. O insanlığın kılavuzuydu, rehberiydi, önderiydi. Onu ve ashabını aç bıraktılar. Zulmettiler. İşkencelerden geçirdiler. Tahkir ettiler. Dışladılar. Toplumun dışına ittiler. Dayanamadı. O çok sevdiği Mekke'yi, mükerrem sıfatlı Mekke'yi, evini yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Sığındığı bir mağarada yol arkadaşı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz onun hüzünlendiğini görünce dudaklarından şu ilahi mesajlar döküldü. La tahzen innallâhe ma'ana. Korkma, çekinme, üzülme, hüzünlenme, yeyse kapılma. Allah bizimle beraberdir dedi. Kardeşlerim, bize gelen emir son derece açıktır. Festakim kema ümirt. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.